Hi everyone, Suraj School welcomes you. This is Sasank, math teacher in Suraj School. I feel proud to be a part of Suraj School. I found here a very good learning environment for teacher as well as student. The aim of Suraj School is to provide equal education to all. So, being a part of Suraj School, I am going to teach the topic of fraction. Let's start with definition. The numbers of the form a upon b, where a and b are natural number, are known as fraction. कोई भी नंबर जो a अपॉन में b की फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन. वह I can underline to the natural number. What is natural number? Natural number क्या होते हैं? All countable number are called natural number. Examples are 1, 2, 3, 4 and so on. Next topic is various type of fraction. Various types of fraction. So first type of fraction is proper fraction. Proper fraction. A fraction whose numerator is less than denominator is called proper fraction. I repeat again, a fraction whose numerator is less than denominator is called proper fraction. Examples are 2 upon में 7, 4 upon में 9, 6 upon में 30. These are the type of proper fraction. Second type of fraction improper fraction. A fraction whose numerator is equal to and more than denominator is called improper fraction. We repeat again, a fraction whose numerator is equal to or more than denominator is called improper fraction. Example are 18 upon में 7, 27 upon में 6 are the example of improper fraction. Third, mixed fraction. A fraction express the sum of natural number and proper fraction is called mixed fraction. I repeat again, a number express the sum of natural number and proper fraction is called mixed fraction. Example are 1 right 2 upon में 7, 2 right 3 upon में 9 are the example of mixed fraction. Next, like fraction. A fraction in which numerator are different and denominator are same is called like fraction. And easy way I can say that a fraction in which denominator are same is called like fraction. Example are 4 upon 7, 5 upon 7, 9 upon 7. Next, unlike fraction.
A fraction in which different are denominator is called unlike fraction. I repeat again, a fraction in which denominator are different is called unlike fraction. Examples are 9 upon में 8, 7 upon में 3. These are the example of unlike fraction. So definition is complete. Now we come out on the questions. So my first question is convert improper fraction to mixed fraction. First question is 18 upon 7. Firstly, we divide 18 to 7. 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21. 21 is more than 18. So the 7 is divided to 2. 7 2 is 14. 18 में से 8 में से 4 गए तो 4. So 7 is more than 4. So आगे हमारा डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब हम इसको किसमें एक्सप्रेस करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन. सो 2 इज whole number, 4 expressed as numerator and 7 is expressed as denominator. So one question is arise from the here, what is a whole number? A countable number with start with 0 is called whole number. जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? whole number. जैसे 0 1 2 3 4 and so on. So 18 upon 7 कीजिए improper fraction is changed into mixed fraction. So 18 upon 7 मिक्स में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो 2 हमारा वोल नंबर हो जाएगा 2 राइट 4 अपॉन में 7. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम सेम एज फर्स्ट 27 अपॉन में 5. 27 अपॉन में 5. तो हम लेट्स स्टार्ट 27 डिवाइड बाय 5. हम 5 को 27 से क्या करेंगे? डिवाइड. तो 5 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25. तो 5 5 जा 25. 7 में से 5 गए तो हमारे पास रिमेंडर क्या बचा? 2. सो वी कैन एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन 5 right 2 upon 5. This is the answer. So we can next question convert mixed fraction to improper fraction. So first question is 3 right 2 upon 5. So first we multiply by 5 to 3. हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो आंसर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? +2. तो लेट्स स्टार्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 +2.
अपॉन में 5, 5 3 जा 15 और 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 अपॉन में 5. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट 7 राइट 1 अपॉन में 3. तो सेम एज फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड प्लस 1 अपॉन में 3, 3 7 21, 21 और 1 22, 22 अपॉन में 3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Comparing. Comparing fraction. First, 3 upon में 5 and 4 upon में 2, 6. Now we can compare 3 upon में 5 and 4 upon में 6. Where we have two fractions, so we तो हम क्या करेंगे रूल नंबर फर्स्ट लगाएंगे which is cross multiply. अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है 3 अपॉन में 5 एंड 4 अपॉन में 6 तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो लेट्स स्टार्ट. 3 multiplied by 6 and 5 multiplied by 4. 3 6 the 18 and 5 4 the 20. So now we can see that 20 is more than 18. So 20 means 4 upon में 6 is greater than 3 upon में 5. Next, comparing fraction more than two fraction. क्या कह रहा है कि कंपेयरिंग करेंगे हम फ्रैक्शंस की. कंपेयरिंग फ्रैक्शन इज मोर देन टू फ्रैक्शन. अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन से ज्यादा फ्रैक्शन है तो हम उसको किस प्रकार कंपेयरिंग करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद एलसीएम. तो स्टेप फर्स्ट इज एलसीएम. देन स्टेप 2 convert into like fraction. Step 3 which numerator is larger, so which fraction is greater than. Thank you. So I hope you understand have. Stay connected with our channels for future video. Thank you.